Hello, everyone. Once again, welcome with the new broadcast. जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले हमें कौन ज्वाइन करने लगा है, देखते हैं इस चीज़ को। इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूं इन द ग्रुप। ओके, लेट मी कॉपी द लिंक। ओके, okay, still one is there, so join it quickly. एक्चुअली आज जो ब्रॉडकास्टिंग थी उसको मैंने 1 PM पे स्केड्यूल किया था, बट समहाउ मुझे इसको लेट करना पड़ा क्योंकि मैं किसी और के साथ गेस्ट थे जो इस ब्रॉडकास्टिंग के अंदर उन्हें कंट्रीब्यूट करना था, बट समहाउ वो बिज़ी हो गए और उसकी वजह से ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो पाई। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लारावेल के और भी जो डेवलपर्स हैं उनके साथ भी हम ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करें। तो आप उससे जो आपकी क्यूरीज हैं वो आप वाइड रेंज के अंदर वहाँ पे आस्क कर सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्टर से। ओके, here। वैसे रमज़ान है और ये वाला टाइम मोस्टली जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो मे बी उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे। सो वेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन ज्वाइन करता है। हेलो, हेलो, आई थिंक माय माइक इज आल्सो नॉट वर्किंग। हेलो, 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 हेलो। जी, आज की बात सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपको आवाज़ सही आ रही है? जी, आज की बात ओके, फाइन, सही आ रही है। जी, जैज़ कैश पेमेंट इंटीग्रेशन पे एक वीडियो बना दें। एक्चुअली इस पे मैंने वैसे इसकी जो एपीआई है उसको मैंने ट्राई किया था, ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो गई थी, बट जो जैज़ कैश का जो मर्चेंट आप कह सकते हैं उनके एंड से इशू आता था। तो फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट किया था और उनका जो कस्टमर सपोर्ट था उन्होंने मुझे 1 वीक बाद रिस्पॉन्ड किया था। तो वहाँ पे उनके एंड से उनके मतलब जो मर्चेंट है उस पे हमारी कॉल रीडायरेक्ट होती थी और रीडायरेक्ट होने के बाद वहाँ पे उनके एंड से कोई इशू आ जाता था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको ट्राई नहीं किया क्योंकि वो जैसे आप कह सकते हैं वो रिलायबल नहीं थी, क्योंकि उनके कस्टमर सपोर्ट भी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे और उनकी जो एपीआई थी उस पे जो गिटहब के स्टार्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थे।
फिर उसके बाद मैंने इसको ट्राई नहीं किया, बट फिर भी मैं इसको एक बार फिर से इम्प्लीमेंट करके देखूँगा, अगर ये वर्क करेगा तो इस पे मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। Karslan, hello, how are you? Okay, fine, bike tips. So thank you for confirmation. ओके, बाइक टिप्स आज की बात। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप वो यहाँ पे रेज कर सकते हैं, और हम अपनी जो पॉडकास्टिंग है इसको हम फर्दर गो ऑन करते हैं। अरसलान अफरीदी सर, लार्ज फाइल अपलोड के बारे में गाइड कर दें। जी अरसलान, जब भी लारावेल के अंदर आपने लार्ज फाइल अपलोड करनी होती है, उसके लिए एक तो आप जो लाजमी चीज़ है वो ये यूज़ किया करें सॉरी, उसके लिए आप लाजमी चीज़ ये यूज़ किया करें कि उसको चंक्स में डिवाइड किया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल है जिसके आप समझ लें 1000 चंक्स बनते हैं, राइट? तो उसको आप 100-100 के चंक्स असाइन किया करें, तो वो खुद चंक्स के ज़रिए पहले 100 चंक्स लोड करेगा, फिर दूसरे 100, फिर इस तरह से सो ऑन। तो उससे क्या होता है कि उस पे जो रैम पे है वो बर्डन नहीं होता। और दूसरी चीज़, जब आप लार्ज फ़ाइल अपलोड करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपकी फ़ाइल जब अपलोड हो रही होती है, तो ड्यूरिंग अपलोड आपका जो सर्वर टाइम होता है वो आउट हो जाता है, राइट? तो इस चीज़ से किस तरह से अवॉइड किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस आता है लारावेल के अंदर क्यूज़ का, कि आप क्यूज़ बना सकते हैं लारावेल के अंदर। क्यू के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस होता है वो बैकग्राउंड पे चला जाता है। तो चाहे वो 20 मिनट ले या 30 मिनट ले, आपका जो यूज़र है उसको वेट नहीं करना पड़ता, जो प्रोसेस होता है वो बैकग्राउंड पे रन हो रहा होता है। हाउ कैन आई सीड डेटा विद फैक्ट्री इन मैनी टू मैनी रिलेशन इन पिवट विद पॉइंट एट कस्टम कॉलम? Yes, you can seed the data using pivot with the many to many relations. I almost shooted all of the videos about relation, how to seed these relations using factories and seeders. So these videos are in Urdu or Hindi. If you can understand the Urdu or Hindi, so you can watch them, or you can also get the concept by visually seeing them. So let me share the link with you, so you can. It's more okay. Content playlist. Okay, Krislan, I attached the playlist link. So visit this playlist and find the it's around 70 or 80 videos where I'm starting the relationship to how to seed the data using these relationship. So follow this step by steps. It will teach you each and everything what you have commented here. ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्यूरी है, ये आपकी वीडियो है। एक्चुअली इस पे मेरी वीडियो नहीं है, बट मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। इसके लिए आपके पास बिटफ्यूम चैनल है, उसका एक वो सार्थक का इंडिया का इंस्ट्रक्टर है, तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। उसने एक फुल सीरीज़ बनाई हुई है कि आप जो लार्ज फाइल है उनको किस तरह से आप चंक कर सकते हैं। और बेसिकली उसकी जो वीडियो है वो उस पे बनी हुई है एक्सेल पे, कि आप एक्सेल के अंदर फॉर एग्जांपल बल्क एंट्रीज किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आप वॉच करेंगे तो आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा लार्ज फाइल अपलोड। जी मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शूट दिस लेटर ऑन,
मुझे इस पे एक फुल सीरीज़ बनानी है जिसके अंदर सिंपली अपलोडिंग होगी, देन उसके बाद थोड़ी-सी एडवांस लेवल के अंदर अपलोडिंग होगी, फिर मल्टीपल फाइल्स अपलोडिंग होगी, इस तरह की सीरीज़ बनानी है। बट फॉर नाउ आई एम नॉट प्लानिंग टू शूट दिस सीरीज़ राइट नाउ। और इसके अलावा जो मैं मज़ीद फ़ोकस कर रहा हूँ वो शॉर्ट्स पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वहाँ पे मैं उनको 100 डे ऑफ शॉर्ट्स इस तरह से मैं सीरीज़ शूट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद देन मैं देखूँगा, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसके अंदर शूट करूँगा। यस Kelvin, आई ऑलरेडी सेंट द लिंक। ओके Aslan, Bernard, Jismo, sorry, are you able to speak English? Yes, I can. So please share your query so I will respond you in English, because most of the guys are here native speaker in Hindi or Urdu, so that's why I'm speaking in Urdu. Don't understand your English. Okay, share your queries so I will try my best to answer you. Before this, I'm speaking in Urdu, so that's why you are thinking that I'm speaking in English. जी अरसलान, आप उस पे जाएंगे बिट फ्यूम्स पे, यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से आपको इसकी गाइड मिल जाएगी। अगर कहें तो मैं आपको बिट फ्यूम्स का यहाँ पे लिंक ऐड कर देता हूँ। फ्यूम्स। जी, ये मैंने लिंक कॉपी किया है और यहाँ पे मैं इसके अंदर जो आपके पास सीरीज़ है उसकी 5वीं वीडियो है। इसके अंदर इंस्ट्रक्टर इसको इम्प्लीमेंट करा रहा है लार्ज फाइल की अपलोडिंग को। तो आप देन इसकी फर्दर फर्स्ट वीडियो को ओपन करके इसको स्टार्ट से कर सकते हैं। Okay, what is the best way to prepare a project to before you start coding? Okay, it's best practice to first to draw it on the notepad by simply notepad and a pencil, and draw all of the modules. What are the modules? How they will interact with each other? What is the database schema? And you can whenever you will draw your database structure and your project structure, so it will save a lot of your time rather than you instantly jump on the coding, and then at some point you realize that something is not like this, it should be like this. So then it will take time to undo these things. So that's why good practice to first try it on the notepad and then go ahead with this one. And by the way, I have a video on it that how you can draw the database structure on the draw.io, right? So you can watch my this video to how you can draw the structure on the draw.io, right? But I will suggest you to draw it on the notepad physically, not to any of the online platform like draw.io. What step should I follow? Okay. Aslan Afridi, welcome. पंकज सिंह, यस पंकज, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं पंकज? ओके, तो शांत कुमार, हेलो शांत कुमार, कैसे हैं आप? और
गाइस आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप यहाँ पे इंस्टेंटली ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर किसी की क्यूरी मिस हो जाती है तो काइंडली आफ्टर 5 और 10 कमेंट्स आप उसको री कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको फिर से भी आंसर दूंगा, राइट। और जितने भी यहाँ पे आइडियंस मौजूद है सबको इक्वल राइट है, किसी को भी कोई प्रेफरेंस नहीं होगी कि मैं जिस उन्हीं को रिस्पॉन्ड करूँ और बाकियों को ना करूँ। I'm facing a problem. I could not get image from blade in controller using live racing null value on store. ओके पंकज, आपको इमेज गेट नहीं हो रहा, वहाँ पे नल शो हो रहा है, तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो फॉर्म है उसके अंदर वहाँ पे इंक टाइप मौजूद है, इंक टाइप इक्वल मल्टी पार्ट फॉर्म। तो वो चीज़ आप चेक करें, उसके अंदर ऐड करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब भी आप फॉर्म से अपलोड करते हैं कोई भी इमेज और वहाँ पे कंट्रोलर के अंदर गेट करते हैं तो वहाँ पे वो एज अ स्ट्रिंग बिहेव करता है। तो अगर आपने इसको एज अ फाइल ऑब्जेक्ट बिहेव कराना हो तो उसके लिए आपने उसके अंदर इंक टाइप इक्वल मल्टी पार्ट, वहाँ पे आपने इसको ऐड करना होता है। Okay, I have been out of job for at least 5 years due to person. So issue and I want to turn to work. What should I turn? CV. Hmm. Okay, so Bern, I think the good way is to applying to the job. First, you need to at least spend 1 month to revise your all of the things what you have implemented, and then you need to apply for a job. Then you will also get one confidence that I have some low knowledge, and then you can apply it on the different website, like you can apply this indeed.com. I'm attaching the link here, so you can apply it in your own region, so it will attach the subdomain according to your region. Where you can also mention on your CV that what skills you have. You can revise it in a 1 month, and then after this, you can mention anything that is still you remember. And somehow developers, if they can't implement the things in the coding stuff, so they forgot. So it's totally upon depend upon your depend upon you that you have remembered the things or not. If you are sure that you have everything which is you worked around when you worked 5 year ago, and now you have knowledge of everything what you have before this, so you can jump directly to the website. And new for 5 year I have been learning. Oh, so you are learning Laravel from 5 year. So now I got your point. Okay, so for this, you need to mention your things that what you have done. Like you need to also mention the other things, like you are following the as you mentioned that you have 5 year of experience, so you can mention that you are following some standards like PSR 4 or PSR 12. You are also following the solid principle, right? And you can also mention the uh, you can mention the server stuff like DevOps things. You can also mention the databases. If you work with the MySQL or Postgres, we mentioned your all of the databases name. And then you need to also add the Laravel versions. If you worked with the Laravel 7, 8, 9, 10, so also mention that you have worked with these versions, because most of the
industries are working with the old around 5.8 or 7 projects. So you can mention in your CV that you have also confident with the older version of Laravel. So it will create opportunity for you because you have experience with the multiple databases, multiple Laravel versions, and then multiple skills like you have DevOps skills, and then Git, how to automate the Git process like this. So you can mention these skills. So definitely you will be hired again if you are still eligible. Okay, so hello, Dushyant Kumar. Okay. ओके दुशांत, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी सिनेरियो डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। सब चीज़ें लगा रही हैं टाइप एंड पोस्ट फिर भी नल शो कर रहा है। पंकज, इस तरह से वैसे अगर आपके पास ये चीज़ हो रही है तो मे बी आपके पास कैशिंग की वजह से भी आ रहा हो। ठीक है, आप इसकी कैशिंग क्लियर करें या इनकॉग्निटो मोड के अंदर इसको ट्राई करें। और इसको वैसे जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही होती है, मैं एक जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही होती है उसको बिल्कुल स्टार्ट पे जाके देखा करें कि क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज वाला इशू आ रहा है तो आप बिल्कुल स्टार्ट से जाएं कि आपने जो इमेज एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है क्या वो फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगर फॉर्म के अंदर मौजूद है तो देन क्या उसके अंदर जो नेम एट्रीब्यूट है वो मौजूद है। देन उसके बाद आप कंट्रोलर स्टफ पे जाएं, वहाँ पे देखें कि क्या आप उसे आप करेक्टली उस जो भी उसका पैरामीटर का नेम है उसे आप कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें तो देन ही आप उसको इजीली डिबग कर लेंगे। And new technology, will it affecting me for getting job? If you learned one skills, right? So Laravel is you saw many videos about PHP is dead. So it's not going to dead because now uh, it's become more popular than previous years, right? So I don't think that it's going to end. And if you want to make sure that on your end that this is going to end of the PHP or Laravel, so just go to the freelance website or Indeed.com or any other website where uh, recruiters are hiring the developers. So you can go there and check the trends that what are the popular trends in the market, like they are hiring the Laravel developer or Python developer or Node developer. So it will give you a complete idea that you should not stay on others suggestion that I'm suggesting you that Laravel will not end. So maybe somehow you feel that no, it's not the exact answer. So you can do this with your own one by going on the platform and do some research that what's the market trend, and then it will teach you that is it Laravel is going to still survive or not. Okay, Tanzim, some any plan on Node.js Python tutorial in future? Tanzim, this some actually I am not familiar with the Node and Python too, and I'm not 90% sure that I will not shoot these type of tutorials because my overall channel is about Laravel stuff. Are you able to share any website I can learn how the e-commerce works? Hmm. Okay, so you can implement the e-commerce with the packages. So
You can simply read the blog. So let me add some blogs here for you to how you can implement the e-commerce website. Okay, I found a link. Is implementing the e-commerce using Gisto package. So you can follow this blog. ओके गाइस, इसके अलावा जितनी भी हमारे पास ऑडियंस मौजूद है उसकी कोई और क्यूरी है तो काइंडली आप वो शेयर करें. यस बर्नेट, यू आर वेलकम. इसके अलावा जितने भी डेवलपर्स यहाँ पे मौजूद हैं तो आप यहाँ पे अपना लारावेल का वर्जन मेंशन करें. कौन कौन से वर्जन्स पे आप लोग काम कर रहे हैं. कोई 8 पे काम कर रहे हैं, 5.8 पे कर रहे हैं, 9 पे कर रहे हैं या 10 पे कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस बेस्ड है या खुद रिमोटली वर्क कर रहे हैं. और आज हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग थी देन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसका पता भी नहीं चला और ये ऑलमोस्ट हमारा 1 आवर कंप्लीट हो गया है. डू यू हैव एनी इंग्लिश वीडियो फॉर बेस्ट. You can search about this best. I saw some videos just only from the thumbnail. I have not watched this one, so let me search it for you. Yes, I found a complete guide about best. Okay, I pasted link here which will teach you step by step that how to implement this best. It's complete guide about very first video. Okay, so here are the okay, it the status I'm not able to fix npm audit. Okay, so what's you are doing? Are you compiling the files? Please tell me what's the task you are doing so then I will assist you better. But you want to basically you are talking about some feature test.
and unit test. If yes, simply you can check it on the search it on the YouTube that how these tests work. I think there is a small course about tests. So let me share it with you. It's okay. I copied the link and share it here so you can watch the video. And by the way, this one is a paid course, so you can learn it from here. That by purchasing this course, you can learn it that how to implement these tests. Integrating Laravel dashboard, Wager, Laravel 10. Okay, so here you mentioned the not npm audit. So I don't know why you are using this npm audit. So did you try this with the npm run build? If you are in the development, so you can simply try it with the npm run dev. But if your development is completed, so you can run the npm run build to compile all of your assets, and it will place them into the public directory. Okay guys, our broadcasting time is completed, and if you have any query, so just shoot this in a broadcast within a minute. Assert, I don't know where to find them apart from see them using. What is the difference between on mount and btn and on mount? Uh, btn on mount and watch. Uh, I just able to see you are asking about on mount. So you can you are asking question about the vue.js. So there is a mounted property. It's not on mounted property, which is going to check that your component is mounted or not. There is another created property. So the difference between created and mounted is created is at the when you run your application at very first time, so it will load the created, and when you are doing this for the others, and so your view will be mounted, not the created will be executed only one time. So follow documentation mix file is not creating. Oh, so 80 you are in the Laravel 10, right? So which is it doesn't support the webpack, so it's configured with the wheat, right? So if you are implementing this in the Laravel 10, so you need to first make sure that is this Voyager support the Laravel 10. I didn't use this. So make sure that if it's running the webpack, so it means that it support older version, not the Laravel 10, because Laravel 10, Laravel 9 and 10s are using the wheat bundler. Okay, 8D, please respond it quickly. So I'm going to end this broadcast. Time is over. Bernd, you can, sir, you can
ask these queries about Vue.js in the Vue.js group, or simply Google it, because this broadcast is totally about the Laravel. And by the way, I'm working with the Nuxt.js, which is a Vue.js framework. So later on, I will shoot full course on it, that how to build the application using Nuxt.js, and then I will shoot full course with the Nuxt.js and Laravel. You are welcome. Welcome. And thank you so much, you guys, for joining us and for a wonderful discussion. So we will meet you in the next Sunday. And once again, thank you and bye bye.